Hello guys, welcome back again. Today we will start with loops in JavaScript. So whenever we want our code to run in a repetitive form, we goes with the loop. The first loop we will study is JavaScript for loop. The JS for loop provides a concise way of writing the loop structure. The for loop contains initialization, condition and increment or decrement. Like if one line thereby providing a shorter, easy to debug the structure of looping. Let me go with the syntax. In for loop, we have a syntax like for brackets. First is initialization. This is like we are putting for initialization I to 0. Like हम provide कर रहे हैं कि जो I की value होगी that will equals to 0. It will for the very first starting it will start with I equals to 0. The second part is testing condition. Like I should be less than equals to 10. I की value की condition check होगी कि I की value जब 10 से कम होगी for that interval जो loop है it will continue. ठीक है, next part is I plus plus. That is I की value क्या होगी increment. For every case I will increase with 1. In console I give a statement console.log user and after that I'm giving the value of I. ठीक है, let's run it with the command node and the name of the file javascript.js. Now for this user 1, user 0, 1, 2, 3. Now how it works? For the very first time value of I equals to 0, it satisfies condition I is less than 10. Okay, fine. Condition satisfied true, it goes inside the blocks and print user and the value of I. Now for the fourth step I plus plus, I की value क्या होगी increase हुई with the one that is I plus 1, that is 0 plus 1 is 1. Now it checks the condition again, it is less than 10, it prints the statement. Again this loops go on till the condition is be satisfied. Like I की value जब greater than 10 हो जाएगी it will stop working. So this is how the for loop works. Now the next loop if we have is while loop. The JS while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on the given boolean condition. While loop can be thought of a repeating if statement. Like it seems like works like a for loop, but there is a changes in the syntax like this. Let me explain how. While we have bracket boolean condition. Boolean condition firstly will condition like I have given a should be less than 10. In for loop हमने क्या किया था, जो I की वैल्यू थी वो इनिशियलाइज की यहाँ पे, बट इन द while loop there is no thing like that कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज करें. इसलिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे करेंगे a equals to 1 कि a की वैल्यू इनिशियलाइज की ब्लॉक के बाहर while loop में करेंगे a should be less than equals to 10. Inside it हम देंगे स्टेटमेंट console.log bracket welcome users to class and inside it I'll give value of a. I print a should be less than and equal to 10. So we'll run it again. We are commenting this code for the better understanding. Now this is run the, let me clear the terminal CLS and run the command again. Now it is welcome to the class 1 value of a is 0. Now let's say value of a equals to this, start from this console a equals to 1. How the loops work, let's check. While loop a equals to 1 and a should be less than equals to 10. The value of a is initialized here. While a should be less than equals to 10, it's check the condition and go inside the this. After that loop statement is console.log welcome to class a. ठीक है. Now we are going with again the next step. The loops work with the same condition. Now we have another part missing here is we have not given the condition, that is a plus plus. For that it loops go in the continuity. The missing part was we have to increment the value of a. Like first is initialization. Initialization is done here. After that it go with while a should be less than equals to 10. That is checking the condition. If the condition is satisfied, it go inside the block and print the statement. Let's check it whether it works fine. Go with the terminal. We have run the command
Now we have welcome to class 1, 2, 3. First is value 1. 1 is less than equals to less than 10. Console.log welcome to class 1. Again value of a is incremented and then again go for the condition. A now a's value changes to 1 is equals to 2. 1 की वैल्यू में क्या होगा a plus 1 हो गया तो a plus 1 से क्या 2 बदल गया 2 is less than equals to 10. Again the condition satisfied. It's go with the welcome to class user to the class 2. इसी फॉर्म में जो लूप है वो बार बार कंटिन्यू होगी टिल व्हेन द लूप द वैल्यू चेंज टू 10 10 is less than equals to 10. यहाँ condition से satisfy. Again the block works. When condition a plus value now incremented a turns to 11. Now condition D satisfied. It breaks the loops and then quotes. Then continues next. Now the next part we have is do while loop. Do while loop is similar to the while loop with only difference is that it checks for the condition after execution. मतलब कि firstly वो condition को satisfy कर condition को क्या करेगा print कर देगा like statement whatever it will be and then after that it will check the condition. Let goes how it works. Like we are commenting it again for a better understanding. The code doesn't mix up. We have do. After that we are printing a statement like we have given do console dot log welcome users time. Here I am printing the value of a. I initialized this earlier here. After that I am giving the condition that is a plus plus. After the continue like the statement block is this is executed, they check the while in which condition is given. I should be less than I mean a should be less than 3. ठीक है, let's check whether how it's work. We have terminal clear the terminal's command is cls. Run it again. Node JavaScript. Now welcome users time 11. Now let's check how okay we have to go with this again. I'm commenting it because it's working with the same time. That's why it's go with only one time. Firstly it's executed a की वैल्यू चेंज होती गई तभी क्या अभी 11 कैसे प्रिंट हुआ. Let me explain it first. जब a की इनिशियलाइज लेट थी we have learned that variables क्या होते हैं let की वैल्यू क्या होती है we can change the value of let. ठीक है, a की वैल्यू भी 1 थी. जब ये while loop के अंदर गया a की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर for the very last time it changes to 11. Now for the same that I let you know that while loop में क्या होता है सबसे पहले क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई. स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई a की वैल्यू कितनी बदल गई 11. इट वाज 11 तो यहाँ 11 प्रिंट हो गया. a की वैल्यू क्या 11 से 12 होगी. कंडीशन डी सेटिस्फाइड. इट डजंट गो अगेन to the check the statement. Now let's print it again. Welcome user. अब a की वैल्यू कितनी है 1 के लिए do में पहले स्टेटमेंट चेक होगी console.log welcome dot user time 1. ठीक है, a plus plus a की वैल्यू क्या चेंज होगी 1 से 2. Again it's check satisfy condition 2 is less than 3. It's go with the statement print हुई फिर से a plus 2 plus 1 is 3. Condition D satisfy and it's print for only 2 parts. Okay. Now the next part is we have foreign loops. The foreign loop is used to iterate over the properties on object. Object in JavaScript are that is in the key and pair value. Like let me explain. Firstly, object constant student equals to name and class. Objects are something that are in the key and pair value. Here key is name and value is Amit. Next one is the key is class and the value is 10. The things in the form of key and value pair are known as object. Here student is object. Now we can check its type like console.log type of bracket student. ठीक है, तो printed cls. It's welcome user time 1 and the type of student is object. Next part is now we are going with the foreign loop. foreign loop में क्या था? foreign loop क्या है? अब अगर objects में loop चलानी हो उसकी keys को iterate करने के लिए हम यूज करते हैं foreign loop. Let me explain how.
एग्जाम्पल समझ आ गई। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो की एंड वैल्यू के पेयर में फॉर्म में होंगे, वो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे नेम है इट्स की एंड द वैल्यू इज अमित। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गोइंग विद द फॉर लूप फॉर let like taking the variable key or we can take it a in with the key for better understanding key in what is the name of object is student key in student। अभी क्या है ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इटरेट करनी मींस फॉर प्रिंटिंग लाइक गेटिंग लूप्स फॉर द ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग विद द फॉर इन लूप। नाउ फॉर इन लूप कंसोल dot log student bracket key। Let's clearing it again, note this। Now we have welcome users, we have Amit and 10, मतलब कि जितनी भी कीज होंगी वो क्या होगी 1 by 1 उनकी वैल्यूज क्या होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज को गेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है दैट इज ऑब्जेक्ट का नाम और ब्रैकेट में की, ठीक है, का नाम। तो उससे क्या होता है आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। सेम दैट वी वांट टू इटरेट द लूप ओवर द होल ऑब्जेक्ट। फॉर दैट वी हैव फॉर इन लूप फॉर लेट की इज अ वेरिएबल नेम इन इट चेक वेदर दैट की exists in student and for that it print the value of that particular key। like if I take a multiple keys, roll number equals to 10 11 and course equals to 5। now let's run it again। so we have all the values of the keys have been printed। now these are the loops that works in the JavaScript। for the very first starting we learn about the for loop। in the for loop the लूप में सब चीज सेम है। क्या होगा कोई पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसकी वैल्यूज चेक होगी कि वेदर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। उसके बाद क्या होगी हम वैल्यूज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट मींस उस वैल्यू को बता रहे हैं कि अभी क्या करना है, एक प्लस करना है या एक माइनस करना है। नाउ इन द फॉर लूप वी हैव लर्न द सिंटैक्स लाइक फर्स्ट वी हैव इनिशियलाइजेशन, देन वी हैव टेस्टिंग कंडीशन एंड देन वी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लाइक सपोज वी हैव एन एरे लेट a equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 error on a because we have printed it again। तो array हो गया हमारे पास ये। now I want to print the value of all the all in the arrays। now for that I don't want to give but initialization and that if want to skip these steps like these one, so we have for each loop। now what is the difference between for each loop? I want it work on an array dot for each loop। we have an item and then I have an arrow operator and I want console dot log item। ठीक है, let's go with this। इसको करने से क्या होता है, CLS करता है अभी कमांड रन की दोबारा। we have 1 2 3 4 जितनी भी एरेज में वैल्यूज थी वो सारी प्रिंट होगी। नाउ ये काम कैसे किया, जैसे हमने एरे किया, एरे में फॉर ईच लूप लगाई, ये ऑटोमेटिकली कहाँ तक चलेगा जितनी एरे की लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ एरे, एंड ऑटोमेटिकली वो अपने आप वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीमेंट कर लेगा। और क्या है फॉर द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स से वो स्टार्ट होगा। लाइक आइटम इज 0, पहले वहां पे 1 आएगा, कंसोल डॉट लिख आइटम में 1 प्रिंट हो गया, 2 फिर 2 आएगा, फिर 2 प्रिंट हुआ, 3 एंड सो ऑन। फॉर दैट अब फॉर इच अब द स्टेप जो स्टेप्स होते हैं इनिशियलाइजेशन, आपकी कंडीशन और ये आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो हम क्या कर सकते हैं स्किप करके डायरेक्टली उसको सिंपलर फॉर्म में जावास्क्रिप्ट में फॉर इच लूप के साथ लिख सकते हैं। कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरे है तो वी कैन गो विद दैट। ठीक है, लाइक अगर हमें चेक करना हो कि हमारे एरे में इवन या ऑड नंबर कैसे हैं, लाइक एरे हमारे पास ये था, तो हम एक एम्प्टी एरे लेते हैं, लेट इवन इक्वल्स टू एम्प्टी एंड सेकेंड वन इज लेट ऑड इक्वल्स टू अनदर एम्प्टी एरे। लाइक फॉर ईच लूप किस पे काम करवानी है, एरे पे। आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट, एरे डॉट फॉर ईच लूप नीड टू चेक, मुझे हर एक आइटम को चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। ठीक है, इसमें करेंगे आइटम
arrow operator. Now have to put multiple conditions, so we have put this block. Like if अगर जो item है its modulus 2 equals to 0, तब वो क्या होगी, even item होगी. Then I want even dot push item. Else even नहीं है तो odd होगी. Else क्या होगा, odd dot push मीन्स हम उस खाली एरे के अंदर ये वाली आइटम्स डाल रहे हैं. ठीक है, तो फॉर लूप वर्क्स विद दैट. अब फॉर ईच में एक एक करके आइटम्स आएगी, हम उनको चेक कर लिए वो इवन है या ऑड है. लाइक वी कैन विद लीव दैट, वी कैन गो विद कंसोल डॉट लॉग number is even, number is even, and the next one is, and we'll printing the number is, that is item. नंबर को साथ में प्रिंट करा लेंगे. फॉर दैट अगर नंबर इवन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ऑड होगा. कंसोल डॉट लॉग वी विल गेट प्रिंट इज नंबर इज ऑड, प्रिंट द नंबर इज आइटम. नाउ I'm commenting the above part to check it in a better way. Now go with this, clearing the. We get for the very first one, it को 1 आएगा यहाँ पे आइटम के अंदर. आइटम का 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आइटम क्या 1 इज ऑड आ गया. इसके हिसाब से क्या ऑटोमेटिकली कहाँ तक चली लूप, जहाँ तक एरे की लेंथ फर्स्ट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट इंडेक्स से एरे की लेंथ तक चलेगा और 1 by 1 हर एक वैल्यू होगी. लाइक पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. फिर उसके अंदर हमने इफ कंडीशन लगाई थी. वी हैव लर्नड इन अर्लियर लेक्चर्स दैट आइटम इफ लूप्स, दैट इफ द कंडीशन सेटिस्फाइड इट गोस इनसाइड द ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट. इफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इट गोस इन द एल्स ब्लॉक. सो array dot for each item 1 is not divided by 2 and remainder is not equal to 0, it dissatisfies the condition. The condition is false, it go in the else block and print for that. This is how the for each loop work, that we don't have to give the item initialization, the conditions and the increment or decrement part. So these all are the loops in the JavaScript. First is, let me revise it again. In the for loop, the syntax is, first is initialization part, second one is testing condition, and the third one is increment or decrement. In the blocks, we have a statement. Okay. The next one was while loop. While loop, first we will check the boolean condition. The boolean condition will be either true or false. If the condition satisfied, it goes inside the block and print the statement or whatever the part logic has to be executed. After that, the initialization is done above the while loop. For the executing the while loop, we first have to initialize outer of that loop. Okay. The next one was do while loop. In the do while loop, we have do. In the blocks, the statement is executed first and then after that condition was checked. In the do loop, firstly condition was executed, like where do console.log welcome users time this and incremented it, and after that the while of condition was checked. This was for loop was used to iterate or loop over the objects. So we have the object student. In the student we have names like different keys and their values. For let key in this, it's check whether that key exists in a student. 1 by 1 it's check for every key like name, class, roll number and post. If the key exists in that object, it will print the value of that key. So this is used to print the value of a key in an object. Console.log student key. At the last one was we study was for each loop. In a for each loop, let array equals to 1, 2, 3. This was I want to iterate the loop over the whole array. Instead of giving the initialization step and condition, we use for each loop. It automatically initializes the values and run till the last part, like till the length of that particular thing, whether it's an array, string or whatever or object. And that inside it we put the if condition. If the conditions work with, when the condition is true, it's executed, otherwise it's go in the else part. This was all about the for loops in the for loop, all loops in the JavaScript. I hope you understand this, and we will cover the next part in the next video. Thank you.